नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग हैं शिक्षक मंडल वर्धा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। हम लोग बता दें आपको कि एक एजुकेशनल ट्रस्ट है जो विदर्भ रीजन में 110 सालों से कार्यरत है। यहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ के पास हो चुके हैं और पैन इंडिया लेवल पे अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। आज हम लोग जिस वजह से मिले थे वो था बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT और बजाज इंजीनियरिंग स्किल ट्रेनिंग BEST का कोलैबोरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ जो डेलीगेट्स हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। हमारे साथ है श्री संजय भार्गवा जी जो चेयरमैन और ट्रस्टी है शिक्षा मंडल वर्धा से। सर नमस्कार। संजय भार्गवा जी। और हमारे साथ है मिस्टर रमेश सर जो हेड है स्किलिंग बजाज ऑटो लिमिटेड के रमेश सर। और हमारे साथ है डॉक्टर नरेंद्र कान्हे जी जो प्रिंसिपल है बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्धा से। सो गाइस आइए बात करते हैं डिटेल में। हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं कि कोलैबोरेशन किस वजह से बनाया गया है और क्या इनके मोटिव है और किस तरीके से हमारे देश की जो कार्य प्रणाली है, जिस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो मोटिव लेके चल रहे हैं उसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे हम लोग बात करते हैं संजय भार्गव सर से। संजय सर नमस्कार। नमस्कार सर। ये बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2017 में शुरू किया गया जब कॉलेजेस बंद हो रहे थे। तो हमारे लिए क्लियर था कि ये देश टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ेगा और हम इस विश्वास से बजाज ग्रुप से हमने करीब 100 करोड़ बजाज ग्रुप ने खर्च किए इस संस्था पे। और ये एक कोइंसिडेंस ही है कि बजाज ग्रुप ने मार्च में डिसाइड किया कि वो स्किलिंग के ऊपर फोकस करेंगे और उन्होंने एक बजाज इंजीनियरिंग स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया और हमने 8 जुलाई को MOU साइन किया। इसके तहत करीब 480 बच्चों को साल में एक 15 लैब्स में ट्रेनिंग मिलेगी जो उनको इंडस्ट्री के लिए तैयार करेगी। BIT का भी मकसद यही था कि हमारे बच्चे इंडस्ट्री रेडी हों। तो वो ये जो चीज़ है जो जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी उसमें वी विल रियली बी एबल टू से दैट वी आर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स। एंड जो प्रोग्राम है वो रमेश जी आपको बताएंगे। बट ये बजाज ग्रुप और शिक्षा मंडल के उसमें है कि ये this will ensure employability, this will ensure skill building, and it will be priced very nominally. And I can assure you that because that's what we are doing, that no student who is meritorious and who deserves to be in this course will not be in this course because he didn't have money. So शिक्षा मंडल का इन चीज़ों में बजाज का व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है। तो ये जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा उसको इस चीज़ की एक्सेस मिलेगी। अदरवाइज व्यवहार है, वी हैव टू मेक एंड्स मीट। रियली नाइस थिंग सर जो बाकी कॉलेजेस से आपको अलग कर रही है। एक बहुत अच्छी बात है कि बजाज कभी पैसों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन देके हम लोग देश की समृद्धि और सशक्त बनाने में मदद करें। हमारे साथ है रमेश सर जो इस प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं। रमेश सर क्या बताना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में आप और किस तरीके से ये BEST जो प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दीजिए। First of all, Salman, thanks for having me in this show, and namaskar to all your viewers. Thank you. And for giving me this opportunity to share our course with you and your viewers. Yes, sir. First of all, this course was conceived by Bajaj and its team of engineers to make engineering students skilled in industry-grade skills. For example, Bajaj में भी recruit करते हैं engineers को from premium colleges from in the country में, but उनको 1 साल तक training देना पड़ रहा है to make them productive. Absolutely. That is why, because they have not been exposed to hands-on skilling on industry-grade equipments. Correct. So this was one of the reason why they have to go through 1 year rigorous training. Correct. So ये gap हम लोग महसूस किया. Correct. Then when we went to different universities, we saw what is the type of equipment they are having, what is the type of lab they are having, and what the type of curriculum they have in the colleges. Correct. उसमें देखा तो there is a lot of gap between what the industry needs and what they are doing, what they are actually teaching.
In fact, many of the universities and colleges, especially in Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities, they are still teaching from the same books and the same type of equipment and the same type of infrastructure, Correct. which was there maybe 30 years before when I joined engineering. So, Absolutely with agree. this type of thing, we felt India can never become a 21st century powerhouse. Correct. So this was realized by my management, and they gave us a homework telling that we need to bridge this gap quickly between university and the industry, so that we produce engineers who are 21st century skilled engineers. Correct. So basis that rigorous research was conducted, what type of course we should do. So we decided after a lot of study that 4 modules this course will be made. First module is mechatronics, where we are teaching basics of hydraulic, pneumatic, sensors, and TPM, and also a little bit of electrical and electronic basics. And in the next module, when I say teacher, it is not theoretical teaching. Correct. First of all, that is the biggest difference in this course. Correct. 80% is hands-on skilling. Wow. Wow. 20% is theory backing. Correct. This is one big difference. Yeah. Even the 20%, wherever we implemented in 4 universities already, it is running across India. So these universities, even the 20%, looking at our equipment and our lab infrastructure and the lab decor, they said even the theory also we want to teach in the laboratory only. So we are changing the whole ecosystem, the way it is taught to the students. This is one big difference. Exactly. And second thing is we are also bringing industry very close to these students. Correct. In the sense, Bajaj is fully involved, fully invested in this course. But we are also bringing our vendor ecosystem, even the other industry people like Tata's, Mahindras, Cummins, even TVS also, we are contacting them and telling them to come and visit our labs, encourage the students, recruit the students for their own purposes also. Because these students, first of all, they'll be from Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities. For example, we have implemented in Symbiosis. 120 students have passed out, and none of the students are from Symbiosis. They are all from Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities. Okay. In fact, just now before you came, I was giving a presentation to them. You should see the day they came, and as they progressed, what was the change in their personality that happened, because they became more confident. They could handle equipment. Correct. In fact, that is one of the critical challenges. If you take an engineer, even from premium colleges, take him to a shop floor and ask him to handle a robo, he won't touch the robo, thinking something may go wrong. Correct. Because that fear of practice is there, practicality is there. Absolutely. So that we wanted to remove, and we wanted them to become productive from day one. So that way we have selected about 22 plus global suppliers of equipments in these 4 modules. First is mechatronics, as I told you. Second is motion sensor technology. That's the course, second module. Third module is robotics and automation. And fourth is industry 4.0 and smart manufacturing. These are the 4 modules. Each module approximately is about a month and a half for graduate engineers. So in 6 months they cover all the 4 modules. And each module has got sub-modules. Okay. And each sub-module, we decided what is the topic they will learn. The curriculum was totally developed by Bajaj Auto. Great. So what is it they will learn? And for each of the learnings, what is the type of lab equipment that is required? What is the lab experiment they'll be doing? To what learning outcome? Learning outcome also we divided into 2. One is a theoretical learning outcome and one is the industrial learning outcome. With 70% orientation towards industrial learning outcome. This is again a big difference between the typical course you find and this course. Correct. So this has gone through a rigorous evaluation and type of brainstorming with 2 university professor panel as well as all the auto sector councils who have gone through the course, and they have told that this is such a unique course, and it's not such a course, such a type of course is not there anywhere in India. So they gave us a go ahead, yes, this will definitely benefit the students, especially from the Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities, where they do not get opportunities for such technologies, such equipment to handle by themselves. So incidentally, I'll tell you the first batch which passed out recently, in fact, still one more day is there. Tomorrow they'll be totally passing out.
already all have been placed, including the girls. They have been placed in core manufacturing. About 23 girls were there. They've all been placed in core manufacturing companies. In fact, the principals of some of the colleges who visited that center, they literally came and held our hands. They said, these type of companies, whichever companies have recruited them, they don't come to our college only. Correct. So because of best center and the type of equipment we have provided, these people have taken our students, and this is a wonderful thing that has happened. Our students are going to benefit, and this will also benefit our area also. But some of the students who got employed, they were so overwhelmed. They even hugged one of my person who went there to coordinate for these placements, and they were literally crying. So, and this is from the student side. From the recruiter side, they were so happy that they could provide employment to these students who deserve it. Absolutely. And who are also skilled. Absolutely. In fact, it's a double bonus for them. Correct. In fact, they went through a rigorous written test plus interview session, and some of them are asking questions on the skill what they've acquired in these 6 months, and they could confidently tell. In fact, some of them even drew a circuit diagram. They even wrote a program in front of them. So they became very confident. Yes, this is really a good thing. But they are not highly skilled. In 6 months, you cannot create a skilled person. Correct. But they have acquired the basics from which they can build on. Handling the machines. Exactly. From there, they can build on. So that's the takeaway from this course. So the first university, Symbiosis, say 120 students have passed. Banasali, it is they are going to recruit, and one pre-pilot they did. Pre-pilot with 9 students, because the girls' students, the girls' university, only girls are there in this course. So initially with 9 students they did, and before even we could ask them whether you need help on placement, already all the girls were placed. So we didn't have the opportunity to tie up them. So they are again going for a second, batch, bigger batch. So that is what is happening in Shastra, Tamil Nadu. 120 students are right now studying. They've gone through the first module, second module they are studying. So very soon they'll also be passing out in another, say, 4 months. So that will be another opportunity. Great. Third is PS Bangalore, where again 60 students are studying. Another 60 more will be joining this month. And that will be the pilot batch is typically 120 students. And from then on, it will be 240 students every 6 months. Graduate students typically are divided into 2 batches. One is January batch, which will be the 8th semester batch students who can go and do this course. When I say do this course is also has been recognized at Shastra University by AICTE. When I say recognition, what it means is they can, instead of going to industry and do their industrial projects, they can come and do this course and get the same credit. Okay. So that's a big advantage. Absolutely. So during their 8th semester, they can do this industrial course. Great. And that's a big benefit for the 8th semester students. But the July batch students are the students who are passed out and who have not got a proper placement, or they're going to some irrelevant jobs. They can do this course and get into core manufacturing. Correct. So this is a big benefit of this course. Absolutely, and that's really nice, sir. जब आपने एक बात यहाँ पे बताई कि आपने जो ऐसी महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा, टीवीएस जैसी कंपनीज है जो इवन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दे आर लाइक राइवल ऑफ द सेम ग्रुप, तो लेकिन यहाँ पे आपने उनको भी एक सिस्टम में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और यहाँ पे एक बहुत ट्रांसपेरेंट एक जो विजन है देश को लेके वो क्लियर हो रहा है कि हमने जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी अपने साथ लैब्स बताई, उनको भी अपन ने वेलकम किया है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा सर। मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा बी रमेश सर आपसे कि इस कोर्स करिकुलम में अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? First of all, they should be in engineering. One, if you take graduate engineers, they should be from core engineering, like you see ECE, EEE, or mechanical, mechatronics, or AI, or instrumentation, or production. These type of courses. For example, civil students may not be eligible for this course. Correct. Because the course is more oriented towards electrical, electronic, mechanical, those type of subjects. So those students will find it easy to adapt and learn. So those are the students who are eligible. In fact, in the first batch, even computer science students have also joined because they wanted to join core industry. Absolutely. So they have also joined, and
basis their efforts, they've learned the skills and they've got employed also in Correct. core industry. Absolutely, sir. But as a course criteria, we are trying to avoid computer science students. Okay. Because the computer science students, even if they join, they try to get into computer programming only. Absolutely, That will sir. be a sort of not utilizing the full capability of the course. एब्सोल्युटली, और हमारा कोर्स जो है वो मोस्टली इंडस्ट्रियल स्टूडेंट जो है या इंडस्ट्रियल जो डोमेन कहे जाए तो उनको लेके ज्यादा ओरिएंटेड है, Yes. फोकस्ड है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारा एक कोर ब्रांच है मेगाट्रॉनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमाइजेशन ऑफ दैट, तो आपको फिलहाल का जो सिनेरियो है अभी आप हम लोग देख रहे हैं पिछले 3 या 4 सालों से, तो एआई काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है करिकुलम में भी, और ऑटोमाइजेशन का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो सर आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है कि एम्प्लॉयबिलिटी रेशो जो है वो आने वाले फ्यूचर में क्या रहेगा अगर इंडस्ट्रीज ऑटोमाइजेशन की तरफ चली जाती है, तो लाइक जो मैन पावर कम होने वाला जो फैक्टर है उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? For example, I will tell you some example. It's Bajaj's own example. Bajaj is no more a domestic company. It's a export powerhouse, you can say. Because we should not think India is the only market available. Correct, sir. For a really competitive, good company, globally, you can become competitive. Correct. For example, our MD used to say in many of the forums, very jokingly, Bollywood, for example, whom everybody knows, exports to something like 50, 60 countries. I may be wrong, your viewers can correct me, but they're exporting to 50 to 60 countries, whereas Bajaj exports to 100 countries. Well, that's really So great. that's where we are. You're far away from Bollywood as well. You are Salman, so don't be angry on me, but this is the fact I'm talking about. So this is what a really good competitive company can do. So many of our, in fact, recently only we opened a plant in Brazil. So it's a huge opportunity. There is no doubt certain conventional jobs are going to change to 21st century skills. Absolutely, sir. So one has to, like earlier we used to say in computer science, one has to constantly learn, otherwise you will become irrelevant. Correct. Now the same thing is happening here also. Correct. Only thing is here you cannot only learn mechanical, you have to learn electrical also, you have to learn electronics also, you have to learn artificial intelligence also, because everything is coming together, especially in vehicles such as EV, where all technologies are merging together. There is sort of the lines are becoming blurred. Who's a mechanical engineer? For example, the other day I was visiting my R&D. The best designers in my R&D who are designing, say, battery packs or for my EV vehicles and even my PCB design and other things. They're all mechanical engineers who are designing this. Correct. So they're not hardcore, embedded system engineers or something. Absolutely. But because of their passion, because of their experience, now they are fantastic engineers we have in our R&D. So that's the, a person who wants to grow, he has to learn. There is no two ways about it. Absolutely. Gone are the days where you can sit back and say, I've joined a company, now to my retirement I can do the same job. Correct. It is not going to happen. Absolutely. You have to constantly learn and you have to improve. Correct. And only the other day we joined our CNG, we launched our CNG vehicle. Now, petrol vehicle technology is one. Now, CNG vehicle technology is something else. Absolutely. उस रेस में आप काफी आगे निकल गए हैं, वो एक पॉइंट है जिसपे मैं आगे आने वाला हूँ। तो ये 300 साल पुरानी डिस्कशन है कि लडाइट्स जो हुआ करते थे, जब लूम्स, पावर लूम्स हुई तो लोगों ने बोला कि जॉब्स डिस्ट्रॉय होंगे। जब कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने बोला जॉब डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। वी हैव टू think about it, but what we have to think about is retraining people into newer areas. Absolutely, sir. Totally agree with this. So जो ये है तो वो इंडियन इंडस्ट्री अगर कॉम्पिटिटिव रहेगी तो वो पूरे वर्ल्ड में जाएगी. So we should look at that. Absolutely. The employment will grow of people who are competent. हाँ, वो एक बहुत अच्छा कोट मैंने सर पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये वो चीजें नहीं है जो आपकी जॉब छीनेगी, बल्कि इनसे अनअवेयरनेस जो है आपका इलिटरेसी टुवर्ड दीज कोर्सेस और दीज थिंग्स आपकी जॉब छीनेगा। अगर आप एआई रेडी नहीं हो रहे हैं, अगर आप डेटा साइंस से अवेयर नहीं हो रहे हैं, तब आप जॉब में पीछे छूट जाएंगे। ये चीजें आपकी जॉब नहीं ले सकती है। काइंड ऑफ थिंग। नहीं, जिस तरीके से whole world is digitizing. Absolutely. And in that digitizing process, we're all seeing that
द लार्जेस्ट पूल ऑफ मैन पावर इज इन इंडिया, एंड वो जो सब करना है वो यहाँ होगा, प्रोवाइडेड वी हैव द कंपनीज टू डू इट. करेक्ट सर. So I think we should be confident of ourselves that if we are going to skill people, there will be some job losses, but by and large there will be job gains. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. और एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे इंस्पायर हूँ इस चीज़ के लिए कि जिस तरीके से आपने पहले ही कहा कि बजाज इज नॉट दैट ग्रुप के जो वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड द मनी. और लेकिन सर एक बहुत सारी एक इन जनरल ट्रेडिशन जो आजकल हो गया है, आई डोंट वांट नेम एनीथिंग, बट एक हो गया है कि दे आर रनिंग बिहाइंड द मनी और जो दे आर लाइक पुटिंग स्टूडेंट लाइक एक डंप में भरना है, बस सीट 60 कंप्लीट करना है, 120 कंप्लीट करना है, इस तरीके का एक ट्रेडिशन चला है. तो आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बजाज के साथ अलायंस भी हुआ है आपका. तो कहाँ से ये सोच जनरेट हुई कि हमने ये गैप को ब्रिज करना चाहिए, लाइक हाउ यू started thinking that ये तो ऑब्वियस है, मतलब इसमें कोई इनसाइट, ग्रेट इनसाइट नहीं है जी. एंड ये जो प्रूफ है, जब हमने शुरू किया 2017 में जी. तो हमने दूसरे कॉलेजेस बंद किए. आप अच्छी क्वालिटी देंगे और रीजनेबल प्राइस में रहेंगे तो आप टिकेंगे. जी. तो जो आप बोल रहे हैं ना, जो कर रहे हैं, तो वो एक मोनोपोली की सिचुएशन होती है, उसमें लोग करते हैं जी. मगर जो बच्चों को रियली वैल्यू ऐड करेगा और जिसके बच्चों को जॉब मिलेंगे वो संस्था टिकेगी. बाकी संस्थाएं नहीं टिकेंगी. वो अमीरों के लिए और कर रहे हैं, मगर अमीर इतने ज़्यादा नहीं है तो उनका मार्केट नहीं है. तो ये दिस इज साउंड एथिक्स, दिस इज साउंड बिजनेस. करेक्ट 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 सर. और जिस तरीके से बात एथिक्स की चली, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या विजन हमारी शिक्षा मंडल जो है वर्धा की संस्था, क्या विजन लेके चल रही है कि हम कुछ मोटो पे हमको देश की समृद्धि के लिए वर्क करना है? हम अपने आप को एक डेवलपमेंट संस्था बोलते हैं, हम अपने आप को एजुकेशन संस्था नहीं बोलते. ओके, दैट्स रियली नाइस. तो मगर एजुकेशन ही बेसिस है डेवलपमेंट का. यस सर, एब्सोल्युटली एग्री. सो देयरफॉर वी आर इन एजुकेशन. सो व्हाटएवर वी आर डूइंग, वी आर थिंकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट कम्स वेरी नेचुरली. अगर आप वर्धा आइए, वर्धा जब गांधी जी वहाँ थे तो बिल्कुल अच्छी और खुली सोच की जगह थी जो इस देश में थी. देश की अनफॉर्चुनेटली या फनी चीज़ ये है कि हम इंडिपेंडेंस के बाद हम ज़्यादा मेंटली डिपेंडेंट हो गए. हमारी इंडिपेंडेंस, मेंटल इंडिपेंडेंस जो है वो कम हो गई है. Exactly, तो अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको क्या करने की जरूरत है. करेक्ट. वो उस लेगेसी के पार्ट हैं जी. हाँ, तो वो हम इसलिए हमको नेचुरली ये आता है. और बजाज ग्रुप जो है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है, तो हमारे लिए तो हमारी ये क्या मतलब गुट्टी में हम पी के आए हैं, तो हमको और दूसरे तरीके से सोचने का आता नहीं. दिस इज लाइक फ्लोइंग इन योर ब्लड. करेक्ट करेक्ट. एथिक्स नहीं है. और दुनिया में क्या चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. क्या हमारे समाज के लिए ठीक है वो हमें ट्राई करना है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. जी जी जी. बहुत अच्छा लगा सर. हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कहाने सर है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल है बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्धा से. तो सर नरेंद्र सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि लाइक यू आर अमंग दोज लकी इंस्टीट्यूट जिनको बेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है. तो आप बेस्ट इंस्टीट्यूट है इसीलिए शायद बेस्ट का सपोर्ट आपको मिला है. सो क्या इथिक्स है बीइंग इन प्रिंसिपल, किस तरीके से आपकी जो मैनेजरियल बॉडी है और किस तरीके से आपका कॉपरेशन कोलैबोरेशन मैनेज करके चल रहे हैं आप लोग, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे. मैं खासकर पूछना चाहूंगा कि मैनेजमेंट पार्ट किस तरीके से इस चीज में आपको सपोर्ट करता है एथिक्स को प्रमोट करने में. First of all, thank you for giving this opportunity. Hello everyone. सवाल ये है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को लेते हो जी. क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत प्राउड फीलिंग है कि बजाज ऑटो लिमिटेड ने इसके लिए हमको चुना और बजाज इंजीनियरिंग स्किल्स ट्रेनिंग आ रहा है. हमारा मैनेजमेंट जिस तरीके से हमको पहले से सपोर्ट करता आ रहा है कि एक विजन हम लेके चले थे कि हम नेशनल लेवल पे आएंगे 10 साल में. तो हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करके 4 साल में ही हैकाथॉन में एक नेशनल लेवल रिकग्निशन मिला पाए. और हमेशा यही सोच से चलते हैं कि कुछ तो भी नया करो, अच्छा करो स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए. वी आर वेरी स्टूडेंट सेंट्रिक. तो स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए जितना हम अच्छा कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं. बिसाइड्स हैकाथॉन हम और कॉम्पिटिशन्स में भी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले. क्योंकि जो विजन लेके हम लोग चल रहे हैं, मैनेजमेंट ने भी हमको कहा कि इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स करवाना है. तो उसके लिए जो मैनेजमेंट से सपोर्ट मिलता है उसके हिसाब से हम डिसेंट्रलाइजेशन किए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, एंड वी वर्क एज ए टीम.
तो हमारा टीम बीआईटी कल्चर चलता है। तो ये टीम बीआईटी कल्चर में एवरीवन गेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब हमको बेस्ट सेंटर मिला है तो हमने ऑलरेडी सब आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि कौन किस रोल में क्या काम करेगा, किस तरीके से स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी। और जैसे कि ये सब मॉड्यूल्स है, वो मॉड्यूल्स में हमारे पास स्पेशल एक्सपर्ट फैकल्टी है वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को चलाने के लिए। हम लोग एक्साइटेड इसलिए है कि हमने जैसे सिम्बोसिस का रिजल्ट सुना है कि उन लोगों को 100% जॉब प्लेसमेंट्स मिली है। बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं लास्ट 3 साल से कि एवरीबडी इज वांटिंग टू गो टू आईटी सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट्स मिल रही थी, लेकिन अभी ये 1 साल में थोड़ी कम हुई है, तो बच्चों का रुख वापस से कोर ब्रांचेस की तरफ जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर इस तरीके का प्रोग्राम मिलता है और पायलट बैच में हमारे 120 बच्चे पहले जाते हैं और उनको अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशली बच्चों का रुख वापस से जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और वो कोर इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट की है, तो मुझे लगता है उन्होंने कोर इंजीनियरिंग में ज़्यादा काम करना चाहिए। तो ये बहुत गेम चेंजर रहेगा उनके लिए। एंड ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड। हमारी लड़कियों ने ऑलरेडी कोर इंडस्ट्रीज में आईटी सेक्टर को ना करते हुए एंड्योरेंस जैसे कंपनीज में जॉब मिलाए हैं। तो ये एक इंकरेजमेंट के साथ हम लोग चलेंगे। इस सेंटर का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करके हमारे स्टूडेंट्स को, ना कि हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ पायलट बैच के बाद, उसके बाद हम नागपुर एंड अराउंड रीजन के स्टूडेंट्स को भी इसमें ट्रेन करने वाले हैं। तो इसको हम बहुत ही अच्छे पॉजिटिवली और एंथुजियास्टिकली ले रहे हैं कि, और एक्साइटेड है सारे लोग, सारी फैकल्टी एक्साइटेड है, क्योंकि रिसेंटली हमको नैक में ए ग्रेड मिला और तुरंत 8 दिन बाद हमको ये न्यूज़ मिली, एमओयू हुआ। तो हमारे लिए सभी अच्छा ही हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होता रहेगा। अच्छा इसलिए हो रहा है सर आपके साथ क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, एथिक्स आपके स्ट्रॉन्ग बनाए रखे आपने, और मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर द सेम। और आई विश के आने वाले समय में आप देश को बेहतरीन इंजीनियर जिस तरीके से आज तक आप देते आए हैं आगे भी समय में देते रहेंगे। और बजाज इंस्टीट्यूट के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है वो एक देश के लिए, देश की समृद्धि और सशक्त बनाने के लिए ज़रूर मदद करेगा, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट लोगों को या गार्जियन लोगों को पता होनी चाहिए रमेश सर, जो आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट को, आइदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फीस के बारे में अगर अब हम डिस्कस करें तो अफोर्डेबल है, मतलब एक मिडिल क्लास पॉकेट साइज फीस हम लोग करवा रहे हैं। In fact, I didn't touch upon that initially, but Sanjay is the right person to talk about fees for Bajaj Institute of Technology, what he is going to do. From Bajaj side, what we can say is, to start with, we are funding 80% of the expenditure. When I say 80% of the expenditure, it is both on the OPEX, I'm calling. CapEx, so सब कुछ हम दे रहे हैं with 100%, which is about 15 crores we are investing in capital expenditure, which is about 170 odd industry grade equipments we are giving in 14 state of the art labs, which are all going to train students on 21st century skills. So that is one. But apart from that, operational expenditure, over 3 years we are going to spend about 5 crores. So totally about 20 crores per university we are going to give. Now this 5 crores is going to be spent like this. We are going to sponsor about 80% of the expense of operational expenditure. This 80% will include not just the faculty fees, electricity, internet charges, and the running charges. Also, it includes the boarding and lodging charges also. उसमें ये भी 80% हम लोग दे रहे हैं. And rest on the other 20%, what all is possible, Sanjay can talk about from his side. But from Bajaj side, we are giving 80% in the first year. Second year, as you go forward, this investment will start reducing. This contribution from Bajaj will start reducing, and it will come to 20% over the next 5 years. And why this is so? Because we are going to support some 15 such universities and colleges across India. So this 20% we will give in terms of scholarships, one. And also we have a mandate. Every 4 to 5 years, we have to upgrade these equipments to industry, to that point of time, the industry grade equipment. For example, this course has got industry 4.0. Already industry 5.0 has come. So we need to upgrade these equipments constantly. So that also our management is committed to us, that we have to constantly improve these curriculum, and this is one. Second is we are also taking feedbacks from these 15 institutes. What more we should do? We are also taking feedback from the recruiters.
and also from the alumni, we are forming a strong alumni association of these best students, where whichever companies they go, let it be Bajaj vendors or Bajaj competitors, we will ask them also what more we should do in this course, which will make you more relevant. Or after learning the skills here, you've gone and joined the industry. What do you feel we should do more here? So taking their feedback, we want to improve further. So this funding will go towards that. This is one part of the story. The other part of the story is we are also looking at developing further modules, which are industry relevant modules, something relevant to the electronic industry or the EV industry and so on and so forth. We are looking at various other options which will be useful for the Indian industry. We are not looking at Bajaj or automotive or manufacturing or process. We are looking at the Indian industry as a whole. What type of engineers we should provide to take India to the 21st century requirement, and also how to make India a powerhouse in engineering. That is the only vision of our management. So towards that, all our efforts are going. Wow, that's really great, sir. और एक छोटा सा सवाल इसके बीच में कि आप सीएनजी की जो रेस है उसमें सबसे पहले आगे निकल गए, तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है. So how do you feel in that case? That is. Yes. So that I think there are more videos in YouTube than I can say, because I think our MD has told a lot about CNG and why this was introduced first, and how it is going to help the environment, because one of our commitment is also towards environmental sustenance. So towards that, we have taken the big step in bringing this technology. That is one. And of course, Mr. Gadkari came and launched it incidentally in Bajaj Auto, and he was also talking about it. So Bajaj is known for launching technologies, innovative things in the market. जो पहले आएगा वही टिकेगा, नई नई चीजें करता रहेगा वही टिकेगा. And Bajaj was holding a legacy since like decades. वो चेतक अभी भी ऐसा है कि विंटेज है, मतलब लोगों के पास रखा हुआ. मगर वो लेगेसी को बिल्ड करते रहना चाहिए, नहीं तो आप यू विल बी साइडलाइन. प्रीमियर गाड़ियां थी, फिएट थी, गायब हो गई. एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि बजाज में ये जो है कि कथनी और करनी एक सी. तो एक चीज जो है वो आपको मालूम नहीं होगा, इस संस्था की विशेषता है कि हमारे यहाँ कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं. ओके. ये हम एक में शायद संस्था होंगे जहाँ मैनेजमेंट कोटा 100%. सो व्हेन वी से, और बजाज में ये है कि पहले करो फिर बात करो. एब्सोल्युटली. सो ये जो है तो उसमें the ethics is not, we are thinking that ethics is an optional thing, but ethics for good business, ethics is the core. अगर आप ethical नहीं हो तो आपका business आज नहीं तो कल डूबेगा. Absolutely, sir. So we are with that. So we think we are normal, but today world thinks we are abnormal. Absolutely. So it's okay. लोगों को संजय सर ऐसे लगता है कि यार सोने की खान है लेकिन बंद करके रखी है, इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं. एज यू सेड के मैनेजमेंट कोटा बंद करके रखा है. इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है BIT. तो दैट्स रियली नाइस थिंग सर. संजय सर, दैट्स रियली नाइस थिंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फॉर श्योर हम लोग पॉडकास्ट शूट करेंगे साथ में. आई लाइक लव टू डू दैट विद यू, फॉर श्योर विद यू सर. सो और कुछ है? मैं अफोर्डेबिलिटी की बात करने वाला था. स्टूडेंट अफोर्डेबिलिटी, एज दे सेड इनिशियली, दे आर मेकिंग इट वेरी अफोर्डेबल. बजाज के अंदर ये है कि कैपेक्स वो देते हैं. जैसे बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी 100 करोड़ रुपए उन्होंने हमें दिए चलाने के लिए. हमें 54 नहीं दी, हमने चलाया. तो तभी संस्थाएं चलेंगी. अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो जैसे बच्चे को जॉब्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, देन देयर इज पीपल विल फाइंड वेज टू इट विल नॉट at any point of time, I think it will not exceed 80,000 rupees for 6 months. That's going to be the outer figure of what somebody will have to bear. Initially he will not bear, but if he is getting a job of let's say 3 lakhs or 4 lakhs at the end of it, and today he doesn't have one, it's an investment worth making. Absolutely. Any student who is meritorious, हम लेट्स सी, आप लोग बोल रहे हैं कि इसमें डिमांड विल एक्सीड सप्लाई, सो बहुत अच्छी बात है. देन वी विल पिक ऑन अ बेसिस ऑफ मेरिट, एंड कोई भी मेरिटोरियस बच्चे को ये इसलिए नहीं वो होगा कि उसके पास पैसे नहीं, वो हम
कवर करते हैं। ये शिक्षा मंडल की पॉलिसी है। सभी इनके यहाँ भी 4-5 बच्चे साल में ऐसे हैं जिनको 1 पैसा उनसे फीस नहीं होती है, वो मेरिटोरियस हैं। आउट ऑफ लाइक एनी कास्ट कैटेगरी काइंड ऑफ रिजर्वेशन आउट ऑफ ये समाज हमारा पूरा है। ये हम वी डोंट वी आर secular and proud to be so. Great. We are humanistic and Great. proud to be so. Great. So there is no distinction in anything other than merit. That is the only thing that, but we understand also that merit is not simply a function. अगर आप एक well endowed को एक weak से compete कराएंगे तो वो merit नहीं होता है। Absolutely. तो हम गांव में भी शिक्षण में काम करते हैं, तो हमें मालूम है कि वो हमारा concept of merit is not just some abstract thing, but based on a reality. तो हम 100 जिला परिषद के बच्चों को who have less marks access देते हैं, क्योंकि वो fundamentally उनको handicap है। So और हमको हमारी सोच, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारी जो सोच है और जो हमें करना है, हमारे पैसे हैं, हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी को देखना नहीं पड़ता। जो हमें लगता है कि वो ठीक है, वो हम कर रहे हैं। Great. By the grace of God, we are able to do and move forward. Correct. That's really great. जिस तरीके से एक कोट अगर दोस्तों आपने सुना होगा कि ग्रेट पावर्स कम विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आज हमारे साथ संजय सर उसकी लाइव एग्जांपल है, जो अपनी पावर्स का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो बैलेंस है वो बनाए रखे हैं। एंड वी आर रियली लव कि सर हमें आपके साथ बात करने का मौका मिला, और आपकी लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से और हमारी ओर से भी कि आप लोग बहुत ग्रो करें, बेस्ट बीआईटी और बेस्ट मिलके बहुत बेस्ट काम करें देश के लिए और चीज़ें इस तरीके से चलती रहे। इट्स रियली लव टू लाइक हैव वर्ड्स विद यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच संजय सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रमेश सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर नरेंद्र कान्हे सर। दोस्तों मैं आज था जीएफ कॉलेज में जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखा गया था, तो हम लोग मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने पर्यावरण का ख्याल रखें। आई एम मीडिया टीवी की ओर से मैं आमिर खान। जय हिंद।